central contracts were announced by BCCI on Wednesday evening. वहाँ से बड़ी खबर ऑफ कोर्स ये थी कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए गए फॉर दिस पीरियड. देयर इज अ ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर हार्दिक पांड्या जिनके बारे में हम सुनेंगे बहुत जल्दी उन्हीं के थ्रू. स्वागत है आपका फॉलो द ब्लूज लाइव पर. हमारे साथ इस फ्राइडे इवनिंग जुड़े हुए हैं एफटीबी इनसाइडर रोहन देशमुख. जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे नागराज गोलापुरी भी. रोहन, इट हैज स्प्लिट Indian cricket like few things has. You just what we saw from those tweets. Did you expect the views to be as polarized as they have been in the last 48 hours? Not really. I mean, though everyone has accepted the fact कि जिस तरह से BCCI ने डिसीजन लिया है to put emphasis on red ball cricket, तो उसकी सबने जो है उसका सबने स्वागत किया है. लेकिन जहाँ पर श्रेयस और ईशान को जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए गए तो उसके बाद काफ़ी सारे सवाल भी ये भी पूछे गए कि ये आखिर हार्दिक को क्यों दिए गए, वो क्यों दिया गया उनको वो कॉन्ट्रैक्ट. उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. लेकिन जो स्प्लिट हुआ नहीं, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह से रिएक्शंस आए हैं, welcoming the move to encourage players to play in the domestic format because that's what everyone has said. Lekin yes, there were a bit of surprises in terms of how Shreyas, who probably I think एक या दो मैच ही रणजी ट्रॉफी के मिस किए हैं, लेकिन उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया. तो उसको लेकर हमने कल भी बात की थी कि क्या है वजह जिसकी वजह से उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला. बट येस, वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस कमिंग फ्रॉम एवरीवन. Absolutely. We will soon bring Nagraj Golapudi into the conversation as well, senior journalist from ESPN Cricinfo. But before that, एक बार let's just take our viewers through those who did get the contract. Obviously headlines उन्होंने बनाया जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, लेकिन ग्रेड ए प्लस वही चार खिलाड़ी जिनके पास ग्रेड ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट थे लास्ट टर्म में भी. रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह एंड जडेजा. ग्रेड ए में केएल राहुल की वापसी, शुभमन गिल को प्रमोशन टू ग्रेड ए. दोज आर द बिग स्टोरी लाइन्स. एंड हार्दिक पांड्या जिन पे हम आएंगे कुछ देर में, वो भी अपने आप को ग्रेड ए में शामिल देखते हैं. ग्रेड बी में ऋषभ पंत जिनके कमबैक का सबको बेसब्री से इंतजार है, वो आते हैं ग्रेड बी में. यशस्वी जायसवाल को अपना फर्स्ट फुल फ्लेजेड एनुअल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एज अ ग्रेड बी प्लेयर. एंड ग्रेड सी, जहां आमतौर से हमने देखा है दिस इज द ग्रेड विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिकेटर्स. ज्यादातर वो चेहरे जिनको लास्ट ईयर जस्ट चांसेस मिलने शुरू हुए थे, दोज प्लेयर्स हु वी कैन एक्सपेक्ट विल फीचर अ लॉट for Indian cricket in the year ahead. So that completes grade C. Important to point out that these contracts are for the period from October 1st, 2023 to September 30th, 2024. Right, Nagraj, this news story has dominated the last 48 hours of your life in particular, most of our lives in general. We spoke about the multitude of reactions we're seeing from former cricketers, some agreeing with the move, some not so much. Were you expecting this? Where do you stand on it? Expecting the reactions? Yeah, just how polarizing the reactions have been. Yeah, I think it is sort of as welcoming as the move it is. This is a move that has been asked by the good-minded people who want it for the betterment of domestic cricket, for protection of domestic cricket, as well as test cricket, as well as the players who just play one format. Remember that this is very important, that the quality of the game has to be high, which eventually translates into a better quality pool of players emerging from domestic cricket. So the BCCI either dragged its feet. It's a combination of various things, but for years, and this is not the first time. Remember that there have been players and prominent players, I don't want to take names, who from the time, like once the IPL got established in the first few years, there have been players who didn't play domestic cricket, and it is like they should look into the mirror also at some times and check that. But it's for the good. We don't need to go back and speak retrospectively about what happened and all that and go digging out skeletons. But sticking to the present, yes, it's definitely like this kind of a move is aimed at. We have talked about that, and once again to reiterate, this is a move basically aimed at not just protecting or enhancing the quality of domestic cricket and allowing the top contracted players or the top players to play when they are available, but it's also to make sure that there is a precedent not set where players kind of
not as much as fine injury, but kind of cite a certain niggle, and then they just kind of go to the NCA and recuperate for months. And that was a sort of a trend that was steadily getting kind of, but it was nipped in the bud a couple of years back by the BCCI, especially the NCA heads, where the ultimatum was given that you have to report to NCA. The player cannot take the fitness in his own hands. Okay, so that explains why they haven't got it. But रोहन, एक जो इम्पोर्टेंट पहलू, जो एक सवाल काफ़ी जगह उठ रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया पे उठ रहा है, इज़ दैट अगर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले, हाउ कम हार्दिक पांड्या जो खुद भी काफ़ी एब्सेंट रहे हैं, उन्हें कैसे ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट मिला? यश, इस पर कहीं ना कहीं हमने कल टच अपॉन किया था कि आखिर हार्दिक को क्यों जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ड कप के वक्त। वर्ल्ड कप में जब वो इंजर्ड हुए थे, ऑब्वियसली इंजर्ड होने के बाद काफ़ी समय लगा उनको वापस आने में। पहले ऐसा लग रहा था कि हार्दिक जो है एक हफ्ते में वापसी करेंगे, उसके बाद एक हफ्ते के 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो चुके, एंड ही इमीडिएटली वेंट टू एनसीए। रिमेंबर, आफ्टर गेटिंग इंजर्ड ही वॉज एट दी एनसीए, और एनसीए में जो है उनके प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा रहा था, एंड दैट्स व्हेन दे फिगर्ड आउट कि नहीं, इंजरी को और हील होने में टाइम लगेगा। इस दरमियान क्या हुआ, उस दरमियान जो है भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट जो चल रहा था, उसमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ऑलरेडी चल रहा था जब वर्ल्ड कप था, तो ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज इन द वर्ल्ड कप साइड, देयर वाज नो वे कि वो डोमेस्टिक मैच खेलने वाले थे वहाँ पर। उसके बाद और एक डोमेस्टिक वाइट बॉल टूर्नामेंट हुआ, उस वक्त वो इंजर्ड थे, and he has slowly started coming back onto the field in terms of his recovery करने के बाद started practicing। तो there is absolutely कोई वहाँ पर ये चांस नहीं था कि वो जाके कहाँ पर कोई क्रिकेट खेले, खास करके वाइट बॉल क्रिकेट खेले। हार्दिक का एक सवाल यही था कि रेड बॉल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे। ऑब्वियसली देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग है हार्दिक की एज अ प्लेयर इन टर्म्स ऑफ हिज फिटनेस, और क्या वो रिगर्स ऑफ वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट विच रिक्वायर्स यू टू प्ले फॉर 4 to 5 days, क्या वो ले सकती है, उसकी बॉडी सस्टेन कर सकती है। तो इसका आंसर सीधा है कि नहीं हो सकता है वो, एंड इट इज़ वेरी क्लियर, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इट्स क्लियर with the player, it's clear with the team management, clear with the NCA, clear with the selectors as well. So everybody knows that when it comes to red ball cricket, it's very difficult for Hardik to handle it, considering that he has been coming back after a spate of injuries. तो हम रेड बॉल क्रिकेट की बात अलग ही करते हैं। वाइट बॉल क्रिकेट जब चल रहा था, डोमेस्टिक खास करके चल रहा था, ही वॉज ऑलरेडी प्लेइंग फॉर इंडिया, एंड आफ्टर दैट ही बिकेम इंजर्ड, सो देयर वाज नो स्कोप फॉर हिम। अब आगे जाके आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप है। Obviously T20 World Cup is the first international tournament that he will play if he's selected, if he's fit, obviously subject to that। और उसके बाद जो है T20Is की श्रृंखला इंडिया की है, श्रीलंका में है, जिम्बाब्वे में है, घर पर भी है। And then when there is a test series which is lined up later in the year, you have T20, the Syed Mushtaq Ali Trophy would be there, you have the white ball 50 over tournament that would be there। तो तब जो है हार्दिक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो तब का सवाल है, लेकिन obviously considering what has happened over the last year and the fact that the white ball domestic tournaments are slated later in the year, if he's fit, obviously there is no question about him not playing, considering that there is a straight diktat from the BCCI। तो जो सवाल है ना कि आखिर हार्दिक को क्यों मिले, it's a simple answer here, that right now he is a white ball player, और आगे जाके जो है वाइट बॉल टूर्नामेंट्स है, भारत के लिए भी है और डोमेस्टिक भी है, तो वहाँ पर जाके है वो खेलने वाले हैं। Chalo, that clarifies that question, which has been a subject of much intrigue on social media. Nagraj, now if we look at it from Hardik's perspective, it becomes a big next few months. He's been out of cricket for, we counted the other day, a little over 4 months. He returned to action at the DY Patil T20 Cup, this IPL, and knowing just how important he is to India's white ball squads for balancing the 11, a big period coming up for Hardik Pandya as he returns to the big stage. Yeah, before we go into that, we need to, I just want to slightly double click on what Rohan said. There is a clause in the BCCI contracts, okay, which states categorically that if a player is not playing for is not representing India,
and he needs to make himself available to play domestic cricket. It is not mandatory as such. You don't like, it's not the word mandatory, I don't think is used there, but it is there. Unless and until the player tells the BCCI why he is unavailable to play domestic cricket. So remember, we need to keep this in mind, and it's an important thing that this clause is what might have impacted the likes of Shreyas and Ishan Kishan, especially Ishan Kishan. So you need to keep people in. We've been speaking about this, that you need to keep the right authorities in picture. You need to communicate with them. So that is the message. As far as Hardik goes, he made it very clear that his body anymore can't sustain the rigors of red ball cricket, domestic cricket, as well as test cricket. As good as everyone thinks, is potentially one of the best all-rounders, and whenever he played the level he showed that what his potential is, including winning matches. Funnily enough, I was just checking the last time Hardik represented Baroda, and that was his own team, was in 2018 December, and he was coming back from an injury and he was playing against Bombay. And guys, take a guess who was the man of the match. Go on. One of the names we are discussing. Shreyas Iyer. Correct. Shreyas Iyer at that point. Poet. Yes. So Shreyas Iyer was the man of the match, and Hardik at that point took a 5-for, made 71, and was trying to deny Mumbai the first innings lead. They fell short by 29 or 30 runs. So that shows Hardik is, but since then his injuries have kind of weighed on him. But he also was pulled up by the BCCI. Remember, this was the 2 years back when he was also kind of not playing domestic cricket. There was a question mark raised as to why Hardik Pandya is not playing white ball cricket or domestic cricket. So he was also pulled up. So it's not any big names are not spared. It depends on whether you're sitting for too long. So I don't think there is a special category or special case for Hardik Pandya. Yes, in a way, he's also one of the leadership candidates. He's a vice captain. According to Jay Shah, he said that he would be the deputy to Rohit Sharma in the T20 World Cup. So you need to manage this. This is a guy who's injury prone. He's coming back into the IPL. He starts from the IPL. He leads. He's going to be under pressure, leading, like coming back to Mumbai Indians. So there's going to be this. So you need to kind of, I think, there's that kind of a slightly, a little bit of, sort of support in a way, if I have to say, to Hardik to kind of make a comeback without kind of having an impact on T20 World Cup. So yes, as for Hardik's challenge, yes, it's pretty clear. We don't need to say much about it. He has 14 matches in IPL. He leads. He kind of has to prove just not himself as a captain, but also as a all-rounder. So we wait and see. Yeah, big few months coming up for Hardik Pandya. Big weekend coming up for me. Nagaraj, I'm going to await my prize for cracking your tough quiz. Thanks for asking that. But yes, Hardik Pandya, what is his philosophy in life? क्या आपने कभी सोचा है कि हार्दिक पांड्या किस नज़रिए से देखते हैं अपनी ज़िंदगी को, अपने क्रिकेट करियर को? ये सब जानने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग धोबल ने उनसे कुछ बातचीत की. आइए उस पर एक झलक डालते हैं. Hardik bhai, I've known your story, coming up from that background, coming from a small town place and reaching these heights. How was the experience? मतलब कैसी पूरी journey रही? Tell us your audience. See, journey तो बहुत ही बढ़िया रही है. बहुत कुछ लाइफ में सीखने मिला है. और इसकी वजह से I always believe that if I can do it, everyone can do it. So for me, सबसे बढ़िया चीज़ है कि जो बोलते ना सीख मिली है पूरे लाइफ में कांस्टेंट हमेशा इस बिकॉज ऑफ दिस जर्नी हैज बीन वंडरफुल. एंड बहुत सारे लोग ना लाइक हाउ आई कुड रिलेट इट टू यू बिकॉज हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, राइट? कमिंग अप फ्रॉम दैट फैमिली, कमिंग अप फ्रॉम स्मॉल टाउन, आपको एक बहुत लंबा पीरियड ऑफ स्ट्रगल करना पड़ता है. एंड वंस यू अचीव इट, अ लॉट ऑफ पीपल लुक फॉरवर्ड टू यू. सो व्हाट डू यू रियली वांट टू से दोज पीपल हु आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू? बहुत सारे लोगों का एस्पिरेशन है टू बी अ क्रिकेटर एंड टू बी लाइक एनीथिंग profession wise. See, the only thing is that be honest, hard. If you want to work hard, you need to work hard with a lot of honesty. अगर आप वो चीज़ कर पाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता. और एक सबसे बड़ी चीज़ वो है कि अगर आप में जुनून है और अगर आप में कला है, कोई नहीं रोक सकता. मैं चाह के भी अगर किसी को रोकना हो, मैं नहीं रोक सकता. तो लाइफ में मुझे 1000 जन ने रोकने की कोशिश की, कुछ नहीं हो पाया. अगर आप में है जुनून और मेहनत करते रहो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती. लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है आपको उसमें. सो मेरा मानना हमेशा है मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं.
amazing coming up from him is already amazing. ये सब चीज़ों के बारे में तो लाइक लोगों को पता है, बट वन थिंग जो आपके फैंस को नहीं पता, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हार्दिक पांड्या फैंस को नहीं पता? कि मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाता। ओके मैं हमेशा होम बॉय हूँ, घर पे रहता हूँ। मैं पिछले 2-3-4 साल में ना मैं कभी बाहर गया हूँ, कभी गया हूँ तो कोई दोस्त का कुछ हुआ है और मैं अवॉइड नहीं कर सकता इसलिए। और दैट्स इट। कभी मैं बाहर निकलता नहीं हूँ, घर में पूरा टाइम रहता हूँ। मैं एक बार मैं 50 दिन घर पे था नॉन स्टॉप, जहाँ मैंने घर की लिफ्ट नहीं देखी है। सो मतलब 50 दिन क्या कर रहे थे आप घर पे? कुछ तो ट्रेनिंग, घर पे बैठ के। मेरे पास खुद का घर का जिम है, खुद में होम थिएटर है, तो मुझे जो चीज़ें पसंद है मेरे घर के अंदर है। ओके सो मैं वो चीज़ घर के अंदर बैठ के करता हूँ। मुझे मेरी फैमिली पसंद है, मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है, और जो भी लोग होते हैं मेरे दोस्त या कोई भी चाहने वाले या कोई भी मेरे मैनेजर या कोई, वो सब मुझे घर पे मिलते हैं। सो आई डोंट नीड टू स्टेप आउट ऑफ माई हाउस टू डू एनीथिंग। How lovely was that to see? Honesty and hard work, the pillars on which Hardik Pandya's story has been made. Indian cricket will hope that the hard work translates into a lot of on-field time in the months to come. बट अब ध्यान अपना डालते हैं जो इंडियन क्रिकेटर्स ऑलरेडी एक्शन में हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में दे सील्ड लैंडमार्क टेस्ट सीरीज विन, जिसके बाद उन्हें एक वेल अर्न्ड ब्रेक मिला है रोहन। बट कब इकट्ठा होने जा रही है टीम वापस धर्मशाला में फॉर द फाइनल टेस्ट? यार अक्सर होता नहीं है कि एक बड़े सीरीज में आपको दो ब्रेक्स मिलते हैं जो इस बार इंडियन टीम को मिले हैं, तो ऑब्वियसली सब इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। फ्यू ऑफ देम ऑब्वियसली हैव फ्लोन टू जामनगर फॉर द प्री वेडिंग, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे कुलदीप यादव इज़ ऑलरेडी गॉन अप नॉर्थ इनटू द हिल्स इन धर्मशाला, अपनी जगह बनाए रखे हैं ऑलरेडी, बिकॉज उनको पता है कि व्हाट कॉम्बिनेशंस कुड बी प्लेड इन धर्मशाला टेस्ट मैच। नोबडी नोज, कुड बी 3 स्पिनर्स, 2 पेसर्स और 3 पेसर्स एंड 2 स्पिनर्स। तो उस महीने में कुलदीप इज़ ऑलरेडी इन धर्मशाला ओवर देयर, एंड बाय 4th जो है सब वहाँ पर पहुँचेंगे। दैट्स व्हाट करंटली द इंफॉर्मेशन। So Nagraj, what's the clause with this? When some players have gone for a party, what is the clause for the other players? What are they allowed to do in the meantime? Party. It's downtime. It's absolutely downtime for the boys. It's downtime. They also Okay. have party only. It's like Enough but I said, think sorry. Kuldeep is like first come first serve, boss. I'm in here. Get me in now. So he's like saying, I pitched my tent. I want to play. So it's भूख दिखा रहा है वो जो बोला था ना रोहित शर्मा ने भूख Yes, दिखा। already in Dharamshala. Yeah, It's all about hunger. Hunger was the buzzword after all from that Rohit Sharma press conference. All right, we will leave it there for Follow the Blues today. Thank you so much, Rohan, Nagraj. Thank you for your time. Be sure वीकेंड आ रहा है आप सबके लिए, हम लोग वापस आ जाएंगे यहाँ 5 बजे. So be sure Saturday शाम 5 बजे be back with us on Follow the Blues live.